Hello, good evening. Assalamu alaikum. मैं हूँ रोहा नदीम and welcome to Vantage Developers presents Game On है. New dawn, new day, new game in the ICC Men's T20 World Cup 2024. अभी तक हमने जितने भी गेम्स विटनेस किए हैं कोई एक भी गेम ऐसा नहीं था जिसमें हम कहें कि थोड़ा प्रेडिक्टेबल या बोरिंग या डल स्क्रिप्ट किया हो. ख़ास तौर पे वो टीम्स जो थोड़ी एसोसिएट टीम्स जिन्हें आप कहते हैं, जो क्वालिफायर्स खेल के अपने अपने रीजन्स से आई हैं और इस वर्ल्ड कप का हिस्सा बनी हैं. ऑल ऑफ दीज टीम्स हैव पुट अप अ ग्रेट शो इन दिस वर्ल्ड कप एंड आज के एपिसोड में भी वी विल डिस्कस 4 सच टीम्स बिकॉज हमने कल का मैच भी रिव्यू करना है, नॉट द पाकिस्तान इंडिया मैच बट द अदर वेरी एक्साइटिंग मैच दैट हैपेंड इन एंटीगुआ. वी विल टेक अ लुक एट Oman versus Scotland, and of course we will be building up towards Bangladesh and South Africa. So a lot of previews coming up, a lot of reviews coming up as well. I've got my beautiful co-host Erin Holland with me to help me unpack everything, every game in this World Cup, and she's a happy Aussie right now. I would love to be in her shoes, just up there at the points table, secure, ready to win another trophy. Erin, does it ever get boring for you as a cricket fan? No, I love winning. Winning's the best. And it's great to support a side which is so often performing in T20 World Cups. Can we make it a three-peat? Can we get the World Test Championship, the ICC 50 overs, the T20 World Cup? Remains to be seen. But a lot of teams actually challenging for that title. I think after what we've seen, most sides playing at least 1 or 2 games now, it's not going to be easy. These are not conditions that are totally conducive to an Aussie win, so I think there's a lot to play for still and a lot of unanswered questions. It's anyone's game. Well, a lot of unanswered questions for a lot of teams actually. We will try to answer some of that questions. कल के पाकिस्तान के मैच के बाद वही बात जो हम कल भी अपने शो में कर रहे थे कि सवाल जो हैं वो शायद ज़्यादा ही हुए हैं विद एवरी मैच. वर्ल्ड कप से पहले भी विद ईच गेम सवाल ज़्यादा हो रहे थे, अभी भी यही चल रहा है. लेट्स सी व्हेन वील स्टार्ट गेटिंग सम आंसर्स, बट वीव गॉट अ वेरी फैंटास्टिक पैनल ऑन गेम ऑन है एंड उनके साथ हम ट्राई करते हैं टू keep you updated as well, and you can send in all of your questions to us via social media and we'll also pick their brains as we go. I've got with me our very favorite white ball striker Martin Guptill all the way from New Zealand. Hi Marty, welcome back. Thank you for having me again. उनके साथ जी हमारे वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन 2009 की ग्लोरी और कितनी बेशुमार रिकॉर्ड्स हैं इनके across formats, one of the finest batters, Yunus Khan is with us again. Assalamu alaikum Yunus, welcome back to Game On है. और उनके साथ of course the professor, countless contributions across format in different roles, not just as a cricketer, but he has served Pakistan and continues serving Pakistan in different roles whenever he gets the opportunity. Mohammad Hafiz, thank you so much for being part of the Game On Air panel once again. Great to have all of you. But Erin, a lot to get through today because each day brings in another chance for us to watch some of these teams in action. And before we get started with the proper in-depth analysis, एक दफ़ा मैच समरी देखते हैं जी. ओमान वर्सेस स्कॉटलैंड की जो मैच कल एंटीगुआ में खेला गया, जिसके काफ़ी रेमिफिकेशंस जो हैं वो अब आप पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी देखेंगे. बट ये थी जी समरी, मैच समरी. ओमान ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया और 150 ऑन द बोर्ड जी उन्होंने प्लेस किया. अथा वाले जो इनके बैटर है प्रतीक अथा वाले, विकेट कीपर भी यही हैं और 54 किया 40 बॉल्स पे. उसके अलावा जी अयान जो हैं अयान खान 41 off 39 for him. Then we saw Aqib Ilyas, the captain, with a super quick 16 off 6 balls जिसमें 2 चौके शामिल थे. अच्छा एफर्ट था लेकिन इन दी एंड बहुत सिक्योर टोटल नहीं था फॉर अ टीम लाइक स्कॉटलैंड. हमने उनकी बॉलिंग में भी देखा, सफियान शरीफ जो है उन्होंने 2 विकेट्स लिए ऑफ हिज 4 ओवर्स. थोड़े एक्सपेंसिव रहे वो, बट बाकी जो बैटर्स हैं उन्होंने भी एक विकेट के साथ चिप इन किया. जवाब में स्कॉटलैंड की चेज was pretty much set up once again by George Munsey. We saw him against England as well in that rain-affected match. 41 this morning, 41 off his bat of 20 balls. And then of course we saw Jones and Cross. So a good effort from their side and they were able to chase this down very easily with 7 wickets in hand. And the Oman bowlers also tried to create pressure, but they were just unable to break that momentum that Scotland were going with, and in the end Scotland won the match by 7 wickets, and that puts them at a good spot in the points table because they now have 5 points, जिसमें से 1 point उनको पहली गेम से भी मिला हुआ है और उसके बाद जो 2 बैक टू बैक वो मैचेस अपने जीते हैं. इंग्लैंड आर इन बिग ट्रबल नाउ.
because Scotland are up there with not just 5 points but a very secure, a very healthy net run rate of 2.16, followed by Australia with 4 points, Namibia with just 2, and England with 1 point and a negative net run rate. Oman अभी तक एक भी मैच नहीं जीत सका, 3 losses in 3 for Oman. But Erin, things don't look good in this World Cup for England. Once again, they were in the last 50 over World Cup, they were also defending champions and they were struggling at one point to qualify to the Champions Trophy. So things were looking really bleak for them as a white ball team just a few months back. And now they're back at that place where they're just looking at the next game, not just in terms of points, but also the net run rate. Yeah, it's warning signs for the defending champions 100%, to think that they're still on negative wins, and obviously they had a rain-affected game to start, which would have put them off the back foot. Only going to got 1 point on the board, rather, I should say, with that washout against Scotland. But to think that their compatriots are just over the border, they're on 5 points, leading that pool, which has Australia and England in it. I mean, it's exciting times for Scottish cricket. They've really come off the front foot first. They're a resounding win, a statement win over Oman. I don't think anyone would have expected, given the talent in their Group B, they would have been in this position, but it's warning signs for England. We could see the defending champions crash out and not even make the Super 8, which is wild. So I'll come to Martin Guptill on this first, because a little Scottish blood in your veins as well, so I think you're kind of enjoying seeing the men in blue and white do so well. But the way that they won over Oman, that positive net run rate, they're doing everything right to give themselves every chance to progress through to the Super 8s. One, are you surprised by this form? And two, I just want to touch on the fact that it was our first game in Antigua and we saw some really batting friendly, beautiful conditions there to contend with. Thoughts on the match and how Scotland are going? Yeah, they're going really well, aren't they? This win just really sent a message to the rest of the cricketing world, saying we're not just here to compete, we're here to actually win. We're not here to make numbers up. We want to go all the way here. And they've got a new head coach in Doug Watson, who I'm very close with, having been coached by him for the last few years at Auckland. Lovely man, and he's put a real positive spin into his coaching, and he's got some great people alongside him as well. And I think the culture that they've set up there is really one of just such positivity. And I know, speaking to a couple of the Scottish guys who I played with in the T20, they love him, they wanted him back, and then just so happened a couple of months later it came out that he was going back. So no, they've been able to create a really nice culture there, and one of positivity, as I said, and it's rubbing off on the way they're playing cricket. I mean, that's a huge win for them last night. Just massive. The way that they commanded that chase, they never let Oman's bowlers settle. They had some great partnerships and really just took the game away. And they've almost taken the game away from England in doing so, which is huge for the cricketing landscape. And they did only get 10 overs against the defending champions, but they fronted up. It was a wonderful performance. It was very positive with the bat. They didn't look like they were letting up. So yes, they have been exposed to the defending champions. They can't just say, oh, the washout saved us. It was still a positive performance with good intent, and they look like they absolutely belong on the main stage here. 100%, and we can't wait to see what Scotland do going forward, and especially putting England in that much trouble. चेज़ देखा है थोड़ा सा कल हमने 2 तरह के चेज़ देखे हैं कल. एक जो ऐसी टीम से जो अभी तक फुल ना उनके पास स्टेटस है, ना उनके पास वो मैच टाइम उनको मिलता है थ्रू आउट द ईयर, ना उनके पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन उनके पास गेम अवेयरनेस है, उनके पास प्लान है, इंटेंट है कि उन्होंने 153 चेज़ किया, 150 का टारगेट चेज़ कर रहे हैं, 151 का, और 13 ओवर्स में ऑलमोस्ट उन्होंने चेज़ किया विद 7 विकेट्स इन हैंड. देखिए, ऐसे ही आपको चेस करने हैं. अब देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बाजू का जैसे पाकिस्तान की टीम हो गई, इंग्लैंड की टीम हो गई, उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम होगी, ये थोड़ा सा अंडर प्रेशर. इवन अगर हम पहले मैच की बात करें वेस्ट इंडीज़ की, तो वो भी थोड़ा अंडर प्रेशर लगे वहाँ पे हमें. और हमने स्कॉटलैंड को देखा जब उन्होंने पहला मैच डिफेंडिंग चैम्पियन के ख़िलाफ़ खेला, तो किस बॉडी लैंग्वेज से आए, किस प्लान से आए. तो मेरे ख्याल से देखें, हम जो बार बार बात कर रहे होते कि बाजू का एज अ टीम आपको स्विच ऑन होना है. ये सिर्फ एक प्लेयर पे नहीं है, 2 प्लेयर पे नहीं है, एज अ टीम आपको स्विच ऑन होना है. और जैसे स्कॉटलैंड ने कल कर दिया है, और कल क्या आज सुबह जैसे कर दिया उन्होंने, वो अमेजिंग था. उसकी वजह ये देखें, उनको पता है कि वो अपने गेम से आगे हैं इस वक्त. वो ये नहीं समझ रहे कि हमने सिर्फ गेम जीतना है, वो ये नहीं समझ रहे कि हमने सिर्फ क्रिकेट खेलने आ रहे एज एसोसिएट ने जो है स्टेटस के. वो ये आए हुए हैं कि हम जहाँ हमें मौका मिलेगा हम विन करके जाएंगे.
और देखो क्या ही अच्छी बात होगी, हमने यूएसए को देखा है, हमने यहाँ स्कॉटलैंड को देख रहे हैं कि वो किस पेस से खेल रही है। और ये T20 का यही एक फ़ायदा है, यही एक मज़ा है कि आपको पेस मेंटेन करना है हर हाल में। अगर आप पेस मेंटेन नहीं कर पाओगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो आप बाद में पोस्ट मैच बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में ये कहते हैं कि मैं 10 रन शॉट हो गया, मैं 20 रन शॉट हो गया, बॉलिंग में ये नहीं, ये तो आपको पहले से ही आपको प्रिपेयर होना है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। और वही जो हम बार बार यहाँ बैठ के हमारा पहले बात करें, एडॉप्टेशन आपने करनी है हर हाल में। अब ये नहीं हो सकता कि आप ऑन द गिवन डे जो है आप टफ कंडीशन हो तो आप बिल्कुल ही बैकफुट पे चले जाओ और फिर आप कोई मिरेकल के लिए रेडी हो जाओ कि जी वो आएंगे, इस तरह होगा, इस तरह नहीं। आपको चैलेंज के लिए अप टू मार्क होना चाहिए। तो स्कॉटलैंड ने किया, और जिस तरह उनकी पार्टनरशिप हुई, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की, जिस तरह वो स्विच ऑन है, तो ये आपको स्विच ऑन होना बहुत ज़रूरी है। अभी हम इन डेप्थ थोड़े उनके पैकेजेस भी इन अ शॉर्ट वाइल हम आपके साथ शेयर करेंगे, बट हफीज़ आई वांट टू ब्रिंग यू इन नाउ बिकॉज अ लॉट ऑफ यू नो इमोशनल, हम सारे काफ़ी इमोशनल कल फील कर रहे थे आफ्टर द मैच, और आपकी तरफ से काफ़ी यू मेड अ लॉट ऑफ सेंस इन दैट पोस्ट मैच शो बिकॉज व्हाट यू सेड वाज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ sincerity towards Pakistan cricket and a little bit of frustration that we all shared after seeing what happened. And it's not an isolated event, this World Cup. This has been a pattern for Pakistan cricket. Ab in reflection, aap kya kahenge, especially in the context of the World Cup and moving forward, and what the kinds of fights that the smaller teams, as they call them, they're putting up, and of course the established teams, the senior teams are struggling. देखें, अभी तक जो एसोसिएट टीम्स की हम बात कर रहे हैं तो वो इस टूर्नामेंट के लिए रेडी पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। वो गेम को चैलेंज के तौर पर लेके परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा कल के मैच के बारे में बात करें, पाकिस्तान की जो एक एनालिसिस हैं या पोस्ट मैच की जो थोड़ी सी जो चीज़ें हुई, वो मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आई। देखें, हार हमेशा बुरी लगती है कि अभी पाकिस्तान का टूर्नामेंट ख़त्म नहीं हुआ, स्टिल पाकिस्तान टीम वहाँ पे मौजूद है, और बाय प्लेइंग गुड क्रिकेट इन नेक्स्ट 2 games वी आर होपिंग दैट दे विल टर्न ऑन दैट, लाइक दे विल ब्रिंग इट बैक टू दैट स्टेज जहाँ पे हमारी फीलिंग दोबारा से उस जगह पे आ जाएंगी कि हम लोग ये टूर्नामेंट के आगे जा सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं हुआ, हम लोग बुरा खेले, एक्सेप्टेबल। बिल्कुल, यू नो राइट वर्ड्स, आपने रिफ्लेक्शन के बारे में बात की और अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात की, जो कि कल काफ़ी हुई है। But Erin, it doesn't look really good for a lot of the established teams right now, especially England, like we were talking about, Pakistan, like we were talking about. But it's good to see that we have some great level of competition coming out in this World Cup, and no scripts, no predictions, no analysis. You know, anything can just, you know, you can drop it in the bin, all of your analysis for every game, because everything, this format itself is so unpredictable, Erin, that you know you can expect anything from any game. This is the format to do it, right? To cause an upset. Anything can happen in a 20-over game. Yeah. So I think it's wonderful to see the associate nations really standing up, taking control of this T20 World Cup, there has to be said. And maybe this is the year of the underdog. I think I had Afghanistan in my top 4, and they're not an underdog by any means now. They're not an associate nation. They're a fully fledged test-playing nation, and they're absolutely showing us exactly how it's done in these conditions. And yet maybe it's a dark horse like of Scotland, maybe America. Gosh knows what Canada will do tomorrow. We hope nothing against Pakistan, but this is the World Cup where all of our predictions have gone out the window. You know, anything can happen, and it goes to show that with the right intent, the right mindset, and just giving it 100%, you can come away with the win. So it's really exciting times, and each and every day it's like, what's going to happen? It's great. Right, can't wait to see what the next matches present us with, especially the one that's taking place tomorrow. But थोड़ी सी अब हम बात जो अभी recent मैच ख़त्म हुआ है स्कॉटलैंड का और ओमान का, उसके ऊपर भी करते हैं। हमने पहले मैच में भी हफीज़ देखा कि जॉर्ज मंसी जो उनके बैटर हैं, उन्होंने आते ही साथ है जिस तरह इंटेंट शो की इन द पावर प्ले, और जिस तरह यूटिलाइज़ किया, और पार्टनरशिप्स वो देख, अगर उनके दूसरे एंड पे बैटर आउट भी उनके पार्टनर हो रहे हैं, तो वो जो नए आने वाले प्लेयर हैं उनको बैक कर रहे हैं, उनको अपने साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं, एंड बैक टू बैक पार्टनरशिप्स के सर्च में वो रहते हैं। हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ ही गोइंग टू बी फॉर स्कॉटलैंड गोइंग फॉरवर्ड? देखें, ये जो चेज़ है, ये एक लेसन है फॉर ऑल द पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू परफॉर्म व्हाट टीम रिक्वायर्स फ्रॉम यू। मुंशी ऑन अ 20 balls, द 41 runs ही एडेड, उसने एक मोमेंटम और वो जो प्लान था इनकी टीम का कि हमने इस टीम से सिर्फ जीतना नहीं है, बड़े मार्जिन से जीतना है, जस्ट टू स्टे अहेड ऑफ द गेम। उन्होंने उस प्लान के मुताबिक अपनी एग्जीक्यूशन की है। ही कुड ईजीली टेक दैट टाइम कि जी हमने अगर
150 या 51 रन चेस करने हैं तो हम 18वें ओवर में चेस करें. दे प्लान अकॉर्डिंगली, स्टार्टेड प्लेइंग हिज शॉट्स एंड देन एट द एंड अगर आप देखें तो इनके जो दो प्लेयर हैं, एक मुंशी और एक जो ब्रेंडन है, इन दोनों ने वो टीम को सिर्फ हराया नहीं, अपनी पोजीशन वहाँ पे ले गए हैं कि जहाँ पे दूसरी टीम जो भी है, इंग्लैंड है, तो उसको एक मुसीबत पड़ गई है कि हम किस तरीके से इस टूर्नामेंट में वापस आएँ. तो इनकी ये जो इम्प्रोवाइजेशन है, मैं पहले भी इनको देख चुका हूँ और मैंने पहले भी मेंशन किया था कि ही इज़ अ क्वालिटी T20 प्लेयर. और ये जिस इनोवेशन के साथ अपनी शॉर्ट रेंज खेलते हैं, ही रिमाइंड्स मी अ काइंड ऑफ अ प्लेयर लाइक डेविड वार्नर. जिस तरीके से डेविड वार्नर सेटल नहीं होने देते किसी को, ही प्लेज लाइक दैट इन T20 फॉर्मेट. और अपनी तमाम एग्जीक्यूशन है वो टीम के लिए जो है वो लेके आ रहे हैं. और इन दोनों ने वो करके दिखाया है कि जिससे इनकी टीम एक तो मैच जीती और दूसरा हेड ऑफ द अदर टीम चले गए कि इनका जो प्लान जो भी इन्होंने सेट किया होगा कि हमने मैक्सिमम अपना नेट रन रेट हाई करना है, ये उसमें कामयाब हुए. It was beautiful to watch, and those reverse sweeps that landed in consecutive balls on the hill there, just wonderful command of that reverse sweep. We saw it in the England match, but we got to see it in full flight today, and the way that he attacked, that innings, he broke the back of that scoreboard, run chase, and he just, took on the task, as you said, Hafiz. And it wasn't just the win, it was the manner in which they won. They were aggressive, they chased it down in 13.1 overs, and they get themselves a massive boost to their net run rate, knowing how important I think that will be in their group. But it wasn't the player of the match for him. It actually went to his compatriot in Brandon McMullen, who 61 off 31, he truly was the anchor of that innings. Martin Guptill, he was beautiful to watch. 9 boundaries, 2 sixes, striking at 196. We'll relive his innings now, but what do you know about Brandon, and are you surprised at the wonderful performance he put forward today? Yeah, to be fair, I don't know too much about him, but looking at the way he played, there was just so much confidence in the way he did it. He played proper cricket shots. He just followed on from what George Munsey had done, really, didn't he? He saw the platform that was laid, and he really just carried it on. And they had a fantastic partnership of 65 and only 4.5 overs. Which, that's going at a really good clip, and it just broke the back of the chase, gave the Scots so much confidence to go out and just carry on the way they were playing. The confidence is showing at the moment under Doug Watson is fantastic to see, and they can foot it with the best teams. And it's going to be interesting their next game. They're playing Australia. They've only got them to go, whether they can carry on this sort of form. And if they only have a small loss, if they do lose, or if they can get a win somehow, that's England gone out of the tournament. That's huge for Scottish cricket. Looking forward to seeing how that plays out. But Brandon McMullen, hats off to him. Great performance. It's a great rivalry, and I'm sure they'll absolutely love to be the ones that send England packing home. A resounding win to Scotland. They are firmly at the top of Group B so far in this T20 World Cup. So congratulations to the men in the best kit, according to Wasim Akram, of this edition of the T20 World Cup. We're off to a very short break here on Vantage Developers Presents a Game on Hay, but do not go anywhere because we have a big match to build up to starting at 7:30 p.m. tonight. It is Bangladesh taking on South Africa. See you shortly. Ji, welcome back to Vantage Developers Presents Game On है. We're back with our pre-match analysis, and of course हमने break से पहले Scotland और Oman की बात की. बड़ा exciting, interesting match था, and England will be in a lot of trouble, especially after how Scotland played. They're at the top now, and they're looking good. The points table for them, and of course the net run rate. Moving on to some more action, we're going back to New York now, where the next match will be starting shortly. Bangladesh taking on South Africa. We know it's going to be an interesting one, especially seeing how both these teams have started their campaigns. They will be looking to make some inroads going forward. But we're back to New York City. 7:30 पे जी ये मैच आज start होगा और आप live देख सकेंगे on PTV Sports. And in Bangladesh, South Africa, another exciting contest awaits us. But how impressive were Bangladesh in that first game?
Oh, they were very impressive. That'd be wonderful to get such a great start, particularly with their arch rivals in Sri Lanka. A lot of questions for Bangladesh to answer, though. Their bowlers were fantastic. Their top order has been a little bit brittle, so that's something they're going to try and rectify to get ahead of the clash against South Africa. And it's not easy to do so when they've got their nasty fasties, as we like to call them, those big four fast bowlers who've been doing the damage for them and have given them the two comfortable wins in the end. Batters, a few questions asked as well by them in these tricky New York pitches, and you know the task doesn't change again for them today. They're back in New York for their match against Bangladesh, and as we look at the head-to-head between these two sides, well, Bangladesh have never managed to beat South Africa. Martin Guptill, how much does that stand for? You know, how much talk happens behind the scenes when you head into a clash when you know that you've never managed to get the win above a team? I don't think that should be spoken about at all in this tournament. I think it's a new tournament. We know that top order batting hasn't been easy here, and South Africa's top order has just been as brittle as what Bangladesh's has. So there's a wee door open there. I just don't know how the Bangladeshi bowlers will go up against a slightly more seasoned top order. But in saying that, you know, they'll be low on confidence, the South African top order as well. It's just whoever wins that, I think whoever wins the top order battle against the new ball today is probably going to win the game. You know, we've seen some very, very low top order scores on this wicket especially. I think that the highest score is probably Rishabh Pant with 41 yesterday. So it's been pretty tough going, but as I said, whoever wins that top order battle should hold the key to the game. Right. But Gupta, why South African batters struggle in these kind of pitches? Because they are used to with back in South Africa. I mean, I can't. So put that is the anything on it, mindset, yeah. or maybe the T20 format. I couldn't put a reason behind it. It's just it's the trend at the moment, isn't it? I mean, it's a trend, yeah. no, I mean the only real game that. Well, there's probably been a couple of games where the top order has done well for a team, and that was Australia against England, Scotland against England, and then Scotland against Oman last night as well. So there hasn't been too many games where the top order has produced. I guess you can say Afghanistan actually is probably the only team that's consistently done that. So whoever, as I said, you know, and those games, they've all won games, haven't they? So as top order batting is going to turn out to be pretty key in the next little while. I wonder, Roja, if this is a reset from the mindset of T20 is a 200 plus game and these pitches are not allowing for that. It's a reset of intent, particularly for the top order. It really challenges you to get those runs, to get off the mark. But Yunus, Bangladesh ka agar aap T20 record dekhe, they haven't been sublime, okay, but especially at home they get those series wins, they get those bilateral wins, but they've struggled in away venues, and they've also struggled against specific teams a lot. Sri Lanka, for example, they have a good record against Sri Lanka. We saw in the first game also they were up for the challenge, and they felt more comfortable playing against Sri Lanka. उनका रिकॉर्ड भी उनके खिलाफ अच्छा है. बट साउथ अफ्रीका के साथ हमेशा बांग्लादेश ने T20s में स्ट्रगल किया है. इसके पीछे क्या रीजनिंग है? क्योंकि बांग्लादेश ने काफी बड़ी टीम्स, मतलब कोई छोटी टीम तो है नहीं, ये इतने एक्सपीरियंस ऑलराउंडर्स है, बट क्यों इतना रिकॉर्ड खराब है? सारे फॉर्मेट खेल रही है. देखिए, अगर हम टीम बांग्लादेश की बात करें तो उनके जो सिर्फ क्रिकेट इश्यूज़ नहीं है, और बहुत सारे इश्यूज़ को लेके चल रहे होते हैं कि साकिब अल हसन हो गए, फिर महमूदुल्लाह हो गए, और ऐसे तमीम का हो गया. मेरे ख्याल से देखिए, जहाँ जहाँ ऐसे इश्यूज़ आते हैं तो वो इफ़ेक्ट करती है आपकी परफॉर्मेंस पे. इट्स नॉट अबाउट कि आपको टीम अच्छी है नहीं, लेकिन जब आप एक्स्ट्रा बर्डन लेके चल रहे होते हो तो वो आपको बाज़ वक़्त एक्स्ट्रा प्रेशर भी डाल रहे होते हैं. तो मेरे ख्याल से देखिए, हमेशा जो प्लेयर्स होते हैं आपकी करंट टीम के, वो गेम से बड़े नहीं होने चाहिए. वो ठीक है, आप अपनी परफॉर्मेंस से बड़े होते हो. हम ग्रेड्स की बात करें तो जब वो परफॉर्म करते थे तो अपने परफॉर्मेंस से वो बाज़ ऑन द डे गेम से भी बड़े हो जाते थे, लेकिन आप टीम से बड़े ना हो, ये आपको समझना है. क्योंकि आप जिस कौम ने, जिस नेशन ने आपको सपोर्ट किया, जिस टीम ने, जिस मुल्क ने आपको नाम दिया है, तो उसके लिए आपको सम हाउ सेक्रीफाइसेस करने हैं. बाज़ आप ये समझते हो कि शायद मैं डिज़र्व करता हूँ बहुत कुछ और लेने के लिए, लेकिन टीम से आपको वो नहीं मिल रहा होता है. तो उस वक्त बैक ऑफ माइंड जब ये आ रहा होता है, तो अगर मैं साउथ अफ्रीका की बैटिंग की बात करूँ, मैं बांग्लादेश की बैटिंग की बात करूँ, तो मैच बॉलिंग का नहीं है ज़्यादा इस पिच पे, बैटिंग का ही है. अगर मैं साउथ अफ्रीका की बात करूँ, देखिए हम जब भी हमने जो पिच रिपोर्ट आती है तो
हर जब साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा होता है तो हर जो आके एक्सपर्ट होता है वो कहते हैं कि ये सेंचुरियन की तरह पिच है, ये वंडर्स की तरह पिच है, ठीक है, कंडीशन तो वही है, लेकिन क्यों फिर ये डिलीवर नहीं कर रहे। जैसे लास्ट मैच में अगर हमने देखा डेविड मिलर और 60 और रन की इनिंग नहीं खेलते, एक आधा और आउट होना था वहाँ पे और वो साउथ अफ्रीका मैच हार जाते। तो मेरे ख्याल से देखिए जो माइंड सेट है इसको चेंज करना है, और वही वाली बात हम बार बार यहाँ पे कर रहे हैं, हम कोई इतनी रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहे हैं। आप जब बैटिंग कर रहे हो, आपके सामने कंडीशन है, तो सबसे पहले आप पावर प्ले को देख के खेलें, क्योंकि कंडीशन ऐसी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ही स्लो खेलें, बट इसमें न्यूयॉर्क की पिच का कितना रोल नहीं है? है, साउथ नहीं अफ्रीका के है, लास्ट देखिए नहीं है, ये तो एक माइंड सेट हो गया ना। अगर कल के मैच की बात करें तो इंडिया के कितने थे? दे वर 84-2 या in 10 overs 2-3 या and they finished 119. Why? It took 7 for 30. Yeah, because of that mindset. We have to just mark that 200 runs. So ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है बाज़ औक़ात। देखिए अगर आपके पास कंडीशन है और आपके पास ऐसे प्लेयर्स हैं मौजूद हैं, अब अगर मैं साउथ अफ्रीकन बैटिंग की बात करूं तो इसमें भी बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो सारे फॉर्मेट खेले हुए हैं, तो फिर क्यों वो प्रॉब्लम होती है। मेरे ख्याल से ये जो माइंड सेट है ये आपको चेंज करना है। वही वाली बात है कि जो हम यहाँ बात करते हैं, आप एक ही स्टाइल से नहीं खेल सकते हो, तभी तो आप जो टॉप के प्लेयर बनते, तभी आप लेजेंड प्लेयर बनते हो, जब यू अडेप्टेशन करते हो कंडीशन के हिसाब से। यही अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं, हमने उनकी क्रिकेट देखी है, जब वो बांग्लादेश में खेलते हैं तो बिल्कुल टाइगर्स की तरह खेल रहे होते हैं, लेकिन जब वो बांग्लादेश से बाहर आते हैं तो वो उनकी वो टोन चेंज हो जाती है। और इसी तरह वो जब अगेंस्ट श्रीलंका खेल रही होती है तो वो फिर कुछ और तरीके से खेल रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये माइंड सेट को थोड़ा चेंज करें, और जैसे अगर आज वो कोई भी बैटिंग करे, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है, जैसे मैंने कल भी कहा था कि साउथ अफ्रीका किसी तरह टॉस हारे या अगर जीते तो बैटिंग फर्स्ट, को अपने आप को थोड़ा सा टेस्ट कर लें। And also this isn't a particularly challenging pool either, Erin. Of course, we've seen that South Africa will have it easy in the coming games as well, but Nepal, Netherlands, Sri Lanka, Bangladesh, so they've had it easy so far, and of course going forward also not a lot of challenging. It will be interesting to see once they make the knockouts what they do then, because it's always up to South Africa to really ruin it for themselves once they're at that knockout stage. I would have said that Group D was actually quite a challenging pool, in that with Sri Lanka and Bangladesh and the Netherlands now being the giant killers and very nearly unsettling South Africa. For me, it was probably one of the pools that I wasn't quite sure who was going to come out on top with, to be honest. But I think the New York pitch really got Anrek Nortje back into some form. He'd been struggling probably a little bit mentally, but I think that uneven bounce and that lateral movement really worked well for him. And I think they kind of bowled the South African quicks into a bit of form, really, to kind of construct that a little bit. But if we're going to look at key players today for Bangladesh, I'd like to come to the professor on a certain young man, only 23 years of age, who's fast becoming a bit of a reputation for a big hitter in Tawhid Hidroy. The 4 sixes that he hit in Dallas in what was a low-scoring affair against Sri Lanka proved the difference. And we've got a beautiful graphic here which just shows how important he is to Bangladesh, because he is the most runs leading run getter for Bangladesh in T20 eyes since 2023. He's got 494 runs at an average of 30. And a decent strike rate of 135. How important is he today in their batting lineup? Well, he's a product of a system, because he played under 19 cricket for Bangladesh, and then coming from a system he got there, and people used to speak up really high for him, like he's a new middle order batsman who should perform better at international level, and he's showing that. So by the talent I can see it's a mindset. That's what Yunus just mentioned about it. Like he as a batsman wanted to take a bigger stage. He wanted to perform at the stage when a batsman can show the most skills. So I think yes, the last game when he took Hasaranga, he's a main player. Like every batsman will think not to take him on straight away, but what he did, he basically taken him on straight away and then hit in 3 sixes and taken the game away from the Sri Lankan point of view. So I think that is a special skill someone should have. Like if you can take the best bowler of the opposition, it means you are basically dominating the game. That is the most skill you need to acquire at international level. So I think he's doing that, and I'm really happy to see someone from Bangladesh
showing the skills, like he can take on any bowler on a day with his skills and can take the game away from the opposition. Only जी. 23 too, Roha. Yeah, just so young with a lot of promise. मैं सिर्फ एक सवाल यूनुस भाई से करना चाहता हूँ, if you will allow me. जी, जी. क्योंकि यूनुस भाई ने एक बड़ी शानदार बात की अभी, और मैं उसको सिर्फ इनसे करना चाह रहा हूँ कि अभी इन्होंने कहा कि आप अपनी परफॉर्मेंस टीम के लिए करते हैं और आप अपने आप को टीम के लिए लेके चलते हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है और मैं यूनुस भाई से पूछना चाहूँगा कि यूनुस भाई वाज वन ऑफ द ग्रेट बैट्समैन एज इन टेस्ट फॉर्मेट और मोस्ट कंसिस्टेंट थे, लेकिन जब अजहर अली आए तो इन्होंने अपने आप को नंबर 3 से, ही वाज अ नंबर 3 टॉप प्लेयर फॉर पाकिस्तान, ये नंबर 3 से नंबर 4 पे आ गए और अपनी जगह पे अजहर अली को जगह it was easy for me to bat मैं ये number क्यों 3. कहना चाह रहा हूँ कि यू प्ले योर रोल फॉर द टीम, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप अपनी विल से नंबर 4 पे गए थे या फोर्सफुली गए थे? No, it was my will. Yes. Because I was thinking Yeah. for team that if Azhar Ali settled down on number 3, it will be much better for the team. But maybe I retire after 2 or 3 years, and then who will be carry my legacy? So I was think that Azhar Ali and Asad Shafiq, they should bat number 3 or maybe number 4, and I should sacrifice myself for team. So that's why team first. Team For, first. yeah, team first. Yeah. फॉर श्योर बहुत आपने अच्छी हमारी मेमोरी भी रिफ्रेश की है, बट ये बात अब स्पेशली कल के मैच के बाद बहुत सारे लोगों की जगह इस वक्त क्वेश्चन में आ गई है, नॉट ओनली इन दैट टीम बट ऑफ कोर्स यू नो जो एसोसिएटेड स्टेक होल्डर्स हैं, पर उसके ऊपर अब मज़ीद भी बात करेंगे. कल पाकिस्तान का अगला मैच ये कनाडा के अगेंस्ट है न्यूयॉर्क में ही, तो एक और मौका है पाकिस्तान के पास कि वो रीग्रुप हों और ये जो बैक टू बैक लॉसेस हैं और जो नेगेटिविटी है उससे बाहर आएँ और एक और मौका दे अपने फैंस को टू शो देयर सपोर्ट. बट कमिंग बैक टू बांग्लादेश, बिकॉज हम कनेक्टेड बातें आपस में हम कर रहे हैं, एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर, हमने साउथ अफ्रीका के बारे में बात की, बट तौहीद रिदोए जो है जिस तरह उन्होंने अपने आप को यू नो सीमेंट कर लिया है और जिस नंबर पे वो आते हैं 5-6, ही इज़ ऑल्सो एडजस्टिंग. बड़ा मुश्किल नंबर है T20 में आने का, बिकॉज आपको नहीं पता आप किस सिचुएशन में आएंगे, रिक्वायर्ड रेट क्या है, या आप अगर टारगेट सेट कर रहे हैं. बट उस मिडिल फेज में जब ये आते हैं तो 141 का स्ट्राइक रेट है इनका. आज के मैच में साउथ अफ्रीका के बॉलर्स पर्टिकुलरली जब मिडिल ओवर्स में हम देख रहे हैं, महाराज होते हैं, उनको भी टैकल करना आसान नहीं होता फॉर बॉलर्स. हाउ इम्पैक्टफुल कैन ही बी फॉर बांग्लादेश टुडे? तौहीद की अगर मैं बात करूं तो जो लास्ट मैच में उन्होंने सिर्फ स्पिनर्स को नहीं ही रन्स किए हैं, उनकी फास्ट बॉलर के अगेंस्ट भी बड़ी अच्छी एक उनका ग्राफिक भी अगर हम देख लें जिसमें वो 2023 ऑनवर्ड्स जी उनका जो स्ट्राइक रेट है 141 का, विच इज़ प्रिटी अमेजिंग, प्रिटी इम्प्रेसिव ऑन दैट नंबर. बट जी आपके सामने भी आ गया ये. सो ही इज़ अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड. सूर्या कुमार यादव है, हेनरी क्लासन, निकोलस पूरन, एवरेज भी अच्छी है. जी. उसके बाद जो उनका स्ट्राइक रेट है वो भी बिल्कुल ज़बरदस्त है, अप टू मार्क है. देखिए जो आपका ये मिडिल फेज है जहाँ हम बार बार बात कर रहे हैं, ठीक है आपके पास स्पिनर्स आते हैं, लेकिन ये कि आपको सिर्फ स्पिनर्स के खिलाफ ही अच्छा नहीं खेलना है. अगर मैं तो इसकी बात करूं तो ये फास्ट बॉलर के खिलाफ भी उनके बड़े सूटेबल टेक्निक है, ज़्यादा हिलते जुलते नहीं हैं, बॉल को अपनी तरफ आने देते हैं और फिर उसको फुल फेस ऑफ द बैट खेलते हैं, तो एक अच्छे बैटर की निशानी है. और जब आप यंग होते हो और ऐसी मुश्किल सिचुएशन की, ये मुश्किल फेज़ है T20 में, इज़ ईजी फॉर मी, जैसे आप जस्ट ओपन द बैट और मे बी आप प्ले नंबर 3 और नंबर 4, इट समटाइम ईजी बिकॉज बॉल हार्ड होता है और ईजी होता है, आपको 20 ओवर मिल जाते हैं, 15 ओवर. लेकिन जब आप इस मिडिल ऑर्डर में 5-6 नंबर खेलते हो तो वहाँ पे बाजू का बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको हो सकता है कि मोमेंटम पीछे से आ रहा हो, उसको आपने एक और स्टेप पे लेके जाना है. और बाजू का ये जो, क्योंकि हम बहुत खुद इस फेज़ में बहुत खेले हैं, और बाजू का क्या होता है कि जब आपकी बैटिंग है तो 4 आउट हुए होते हैं. तो अब आपने क्या करना है, आपने अपने आप को आपकी स्किल्स को इन्हांस किया होता है कि मैं जाऊंगा रन बॉल खेलूंगा और सडनली 4-5 बॉलों के बाद मुझे बाउंड्री चाहिए ताकि मेरा जो स्ट्राइक रेट है वो ऊपर रहे. और ख़ास तौर पे ठीक है हमारे टाइम पे T20 बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वनडे में भी यही सिचुएशन थी, क्योंकि मैं खुद 5-6 नंबर खेलता था, तो बहुत बड़ी टीम होती थी हमारे पास. जब मैं जाता था मैं इतना कोई एक्सक्लूसिव हिटर नहीं था, तो जब मैं जाते थे तो मुझे 10, 12, 15 ओवर मिलते थे. तो मुझे उस वक्त क्या करना होता था कि मुझे कोशिश होती थी कि मैं जल्दी से अपने 8-10 रन बॉल करूं, उसके बाद मैं थोड़ा सा स्ट्राइक रेट अच्छा ऊपर कर लूं. तो इनकी अगर मैं बात करूं तो इनमें ये क्वालिटी है कि ये सिर्फ, अगर हमने जो लास्ट मैच में देखा वो सिर्फ मिड विकेट की तरफ नहीं खेले, उन्होंने एक्स्ट्रा कवर भी खेला, उन्होंने सामने भी खेला. तो ये एक अच्छे बैटर की निशानी होती है. और जब आप यंग होते हो, 4 छक्के इनकी इनिंग्स में थे और एक एक्स्ट्रा कवर भी छक्का है उसमें. सिर्फ आप मिड विकेट की बात नहीं करेंगे,
कि उसमें एक एक्स्ट्रा कवर पे भी है और सामने भी 2-1 बाउंड्रियाँ मौजूद है। तो मेरे ख्याल से जब आपका यंग बैटर इस पोजीशन पे खेलते हैं और वो प्रेशर सिचुएशन में वो खेलते, तो मुझे लगता है कि तोहिद बड़ा ज़बरदस्त बैटर है और मुझे लग रहा है कि वो बहुत जल्द आपको टॉप ऑर्डर में नज़र आएंगे, कहीं 3-4 नंबर पे, क्योंकि जब यंग होते हैं और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो आपको बहुत अच्छा चांस होता है आपके पास। Something that's going to be incredibly important for Bangladesh if they're going to get up above the might of the Proteas today is absolutely how they bowl on this tricky New York City deck. And lucky for them, they've got two of the greatest in terms of wickets taken ever in T20 internationals within their ranks. Shakib Al Hassan, I mean, we know how wonderfully impactful he is with the ball and his leadership on the field. Yes, he's not the captain in this edition of the comp, but what he brings as well with his guile, he's so experienced in this format of the game. And Mustafizur Rahman, let's have a little look at this graphic here. Most wickets in T20Is. Shakib sits second on there with 146 at an economy of 6.8, and Mustafizur Rahman at 7.5, 196 wickets. Guppy, you faced a lot of these two across your time. What makes them so dangerous? They just know what they're doing. I mean, Shakib, you know, he's been one of the premier left-arm spinners in the world for his whole career. How long he's been playing? 15, 16 years or so. So, you know, he's just got such good control. He bowls quite wide, from wide of the crease, and just brings in such a strange angle to face. And he's always bringing the stumps into play, which makes him so dangerous, and especially in Bangladesh where, you know, there's not too much bounce, there's a bit of spin, you know, you just don't know what's going to happen. But on this wicket here, he's going to be very, very key for Bangladesh to try and contain the South African batters and control the run rate, which is going to be huge for them. And then Mustafiz, I mean, he's a special talent. You know, he can bowl up around the 140 mark when he's bowling, you know, seam up, and then when he's got that funny wrist where it almost looks like he's throwing it, but he's got such a supple wrist that his slow ball comes out, and it's so different that as a right-hand batter, it's actually really hard to get away. You can't hit across the line because he almost gets overspin on it and it gets a bit of extra bounce. So, and then not to mention his Yorkers, amazing Yorker bowler. Really hits. If he's under pressure, you know he's going to be able to hit that Yorker pretty well. So, you know, two pretty special players there to watch out for tonight. Yeah, they'll be wanting a big impact from both of them today. We're off to a very short break here on Vantage Developers Presents Game on Hey. But do not go anywhere. Plenty more pre-match analysis and, of course, Roha, a couple of quizzes. We want you to win some prizes. See you soon. Welcome back to Vantage Developers Presents Game On Here. We're building up to Bangladesh versus South Africa in New York. We've talked a lot about the pitch, the conditions, what the surface offers. Of course, by now we have a fair idea of what to expect in terms of runs. But coming back to what we were talking about before the break, South Africa क्यों इतनी formidable होती है जब उनको उनके comfort zone में वो रह के बैटिंग करते हैं. We know उनके last मैच में जिस तरह बैटिंग एक्सपोज हुई, टॉप ऑर्डर एक्सपोज हुआ, क्लासन, डीकॉक, हेंड्रिक्स, not the best contributions in that last game, but it was Killer Miller, as we call him, David Miller, who saved the day, Hafiz, for South Africa in that last game. So player of the match, 59 of 51 was for him. Again, जिस तरह हम ब्रेक से पहले हृदय की बात कर रहे थे कि मिडिल ऑर्डर में आके कितना मुश्किल होता है उस सिचुएशन में जब टीम भी डूब रही है और आपने उसको चेस की तरफ लेके जाना है, फिनिश की तरफ लेके जाना है. मिलर से अच्छा कौन कर सकता है? ये हम उनके स्टैट्स अभी हम डिस्कस अगर करें तो T20s में बैटिंग इन दैट फेज वेयर ही कम्स इन फ्रॉम 4 to 7, हिज स्ट्राइक रेट इज 145, व्हिच इज incredible across पूरे career में. He's a special player as a middle order batsman, doing this job from the last many years for South Africa, around the world, wherever he goes as a batsman in any franchise cricket. He had a lot of value, and it's a really tough place to play in T20 format. Number 4, number 5, number 6 is the hardest place to play as a batsman, because either you need to get the momentum or you have to maintain an accelerate according to the game of the requirement of the game. So I think he is doing a fantastic job for South Africa, and this innings, to me, I have seen him playing very good innings, but this is special innings because at that time when he came in, South Africa can easily lose the game.
because he was the only person who took that responsibility to graft the innings and then win it for South Africa. So I think overall the batting is struggling, to be honest, in these conditions. The top order is not firing, and that is a concern for them. But he is the man who shown a great ability to absorb the pressure, and at the end, when was the right time to peak, he basically given a best shot. He absolutely resuscitated that run chase for South Africa. It has to be said, they were absolutely nowhere until he came in, and then I think it's no surprise that the experience of Killer Miller with the youth of Tristan Stubbs and the ability got them across the line, and they managed to survive their bogey team, the Netherlands, one more time. Third time's a charm. They got the job done against the Dutch. But the pace attack, the South African nasty fasties, the big four, they've gone with the 4 out-and-out quicks. It's done them well so far in this edition of the tournament. They sit second in terms of the best pace attacks in this edition of the ICC T20 World Cup. I come to you, Guppy, on this because Andrik Nortje, he's back in form. He's been absolutely belligerent with the ball. What has been so wonderful about the pace attacks, and how happy will they be to see that their spearhead of their pace attack is so well and truly back in some form? Yeah, they'll be relieved, I think, is one thing. But, some of the wickets they get back in South Africa, they look like this. They're green, they seam around, they bounce, it's got a bit of pace. So they know how to bowl on these wickets, and, they've done just that. They've just bowled extremely well. As you say there, I mean, they're averaging 10.29 as a collective with the fast bowlers, which is amazing. 4.46 economy rate. I mean, that's impressive. 4.46 as a pacer. I mean, that's a collective as well. I mean, that's unreal as a 4. And then you've got Otniel Bartman, his economy rate's 2.5. 2.5 runs and over in T20 cricket is pretty impressive. Andrik Nortje, 3.3. But the impressive thing is Andrik Nortje is a big tournament player. His stats in the T20 World Cups alone, this is his third tournament, he's got 26 wickets at 8.61. 3 4 wickets in an innings, best bowling of 4 for 7, and his RPO is only 4.99. Wow. And that's playing on some pretty batter-friendly wickets in Australia and in the UAE as well. So he's a big tournament player for South Africa, and they'll be so relieved that he has turned up to play and is bowling extremely well. यूनस ओटनिल बार्टमैन की बात ये कर रहे थे, जिनकी अभी इकोनॉमी के बारे में बात हो रही थी कि एक तो 2.5 का इकोनॉमी रेट T20 फॉर्मेट में, फिर 77% जो उन्होंने अभी तक, हम अगर इस वर्ल्ड कप की बात करें, जितने भी टोटल बॉल्स उन्होंने बोल किए हैं 8 ओवर्स में, 77% ऑफ दोज बॉल्स हैव बीन डॉट बॉल्स. और अक्रॉस अभी तक वर्ल्ड कप में जितने भी बॉलर्स हमने देखे हैं, आंड्रिक नोकिया और ओटनिल बार्टमैन जो है वो टॉप 5 बॉलर्स में आते हैं. साउथ अफ्रीका के बॉलर्स आर एट द टॉप ऑफ द रैंकिंग्स राइट नाउ एज फार एज द डॉट बॉल्स एंड इकोनॉमीज गो. कितना इंपॉर्टेंट होता है ये T20 में? अब आंड्रिक नोकिया के लिए तो मैं सबसे पहले एक बात करूंगा कि जो उनको वो फेस दिया है, जो रोल दिया है, वो बड़ा सूटेबल है उनके लिए, क्योंकि बैटर्स वहाँ कोशिश कर रहे होते हैं कि बिग बाउंड्रीज के लिए, लेकिन जब आपको वहाँ पेस मिलती है और आपके पास पिच में भी जूस मौजूद है, बाउंस मौजूद है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है. ये जब दूसरी पिचेस पे जाएंगे तो फिर देखेंगे कि ये इस रोल को कैसे ये इसके साथ जो है ना वो जस्टिस कर सकें, क्योंकि यही हमने किया था. अगर हम बैक 2007 और 9 के वर्ल्ड कप की बात करें, उमर गुल को हम यही करते थे कि जब वो उस फेज़ में आते थे तो बड़े सूटेबल होता. जिस तरह बार्टमैन के लिए एक, क्योंकि नया एडिशन है, अभी कंडीशन में उनके लिए सूटेबल हैं, अपने वेरी करते हैं. ख़ासतौर पर जैसे लास्ट मैच में उन्होंने आखिरी ओवर में 2-3 आउट किए हैं. उनके पास क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी, अगर मैं बात करूँ, ये देखें, शुरू में वो कोशिश करते हैं कि हार्ड लाइन को हिट करें और कंडीशन उनके सूटेबल हैं, और उसके बाद ये देखें, और बहुत अच्छे लेंथ और लाइन पे बॉल करते हैं. इनको सीम और स्विंग मिल रहा होता है पिच से भी, तो वो ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा रूम ना दिया जाए, स्टम्प टू स्टम्प बॉल किया जाए, और पिच की कंडीशन भी उनके सामने है. और जब आखिर में आते हैं और जब लास्ट ओवर्स करने आते हैं तो उनके पास वेरिएशन बहुत अच्छी हैं. स्लो वन बहुत अच्छा करते हैं, रनअप भी बहुत स्मूथ है. तो कोशिश करते हैं कि वो जो इनके पास वो जो वैरायटी ऑफ बॉलिंग है वो करके देते हैं यहाँ पे. वैसे इन कंडीशन में तो बार्टमैन जो है ना वो बैटमैन ही लग रहे हैं. This needs his Batmobile to land in New York on the ground. But a lot of expectations from this South African team. We have some giveaways as Erin hinted before the break. Cheesiest family deal आपको दे रहे हैं जी. एक बार फिर आपके पास मौका है, अगर अभी तक आपने नहीं जीता तो आप क्या कर रहे हैं.
सवाल जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है आज का. Who was the captain of the Australian team during the 2021 ICC T20 World Cup? And if you know the answer, आप कॉल करें इस नंबर पे. And of course, you will be able to win a cheesiest family deal. And not only that, we also have a Blue World City win a plot. Shoaib Akhtar Enclave में आप जीत सकते हैं. Erin, what's the question for today? It is, how many 50s does Yunus Khan have in T20 internationals? He's a little puzzled look on his face, so you might be able to actually answer the question for him. You can answer your comments in the section on the Facebook page of Blue World City Islamabad. So, want to win that one, you can be my neighbour, because I've already taken the corner plot, Rohan. Called dibs on the corner plot. But we have something else to give away. Al Karam, our beautiful sponsors. First of all, thank you for this lovely outfit that I'm wearing. It's by Al Karam and they're giving away a gift pack. If you can win predictor of the day, जी आप बन सकते हैं. और सवाल ये, who will be the player of the match today? To answer, go on the social media page of Al Karam and well, you will be able to win a beautiful gift hamper. As you can see, I have it here with me. So you will be able to win this. इसके अंदर बहुत amazing चीज़ें हैं. So please, if you know, if you can predict, but Erin might be able to help you. Erin, who's player of the match today, according to you? I'm going to go Anrik Nortje again. I think given the conditions, he's back in some serious form. I think particularly if they win the toss and elect to bowl first, which is imminently happening, I think it's going to be a really difficult condition for them. So yeah, that's my guess today. South Africa for the win. Anrik Nortje for player of the match, and he's gonna take a fifer. I said it. I can't wait to see a Quinton de Kock, a quintessential Quinton de Kock innings. We haven't seen that so far in this World Cup. We know what he can do at the top of the order. But Hafiz, moving towards this match, in a while we will share live updates. We'll have the toss as well. But once again, we are at that point where we talk about what South Africa should do if they win the toss. देखें, जो बांग्लादेश है उनके पास एक होप है कि इनकी टॉप ऑर्डर इज़ नॉट फायरिंग एट द मोमेंट. तो ये एक होप होगी बांग्लादेश के पास. और मैं ये चाहूँगा ज़ात तौर पर कि आज शोरिफुल जो हैं वो इस टीम का हिस्सा बने, बांग्लादेश की टीम में. और वो तस्कीन और मुस्तफ़ीज़ विल एड अ लॉट ऑफ वैल्यू ऑन दिस ट्रैक. और इनकी टॉप ऑर्डर को अगर वो दोबारा से हिट करते हैं और अगर वो फंसते हैं तो दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैच जहाँ पे ये एक उनको जीत के आगे जा सकते हैं. तो मुझे लगता है कि इनकी बॉलिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि ये राइट एरिया हिट करें और इनकी बैटिंग के अंदर जो कॉन्फिडेंस है. I'm just hearing it's toss time, Professor. I'm so sorry. Mike Hazeman's in New York City with the captains. Let's get there now. Yeah, everyone's favourite Australian who lives in America but moonlights as a South African, Mike Hazeman with the toss there. And surprisingly, South Africa winning the toss, electing to bat first, Roha, and Yunus Khan rejoices over to my left. You're excited about that? Thanks God they decide to bat first. That's how the batter will have more chance to perform not under pressure. So. No, I think me, I heard something. They're watching Game On here in that, because they're getting bored between games. I hope so. So they're keeping up with our analysis. Yeah, he decided as well, given that it's a used wicket, we're back in New York for our third day in a row, so back-to-back usage on this wicket. He actually thinks it will get harder to chase on. It will be not easy to chase on these people because back-to-back games on this, and now it's a third game on this pitch. So I think that's why it was a wise decision to bat first. But Bangladesh said they would have been happy bowling first, Roha. Things अब excuse नहीं है because अब captain ने भी ये कह दिया कि I wanted to bowl first and he is happy to do that. लेकिन मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग है दोनों की तरफ से. लाइक साउथ अफ्रीका की माइंडसेट समझ में आता है और वो बिल्कुल ठीक है. मैं इसको बैक करता हूँ कि ऐसे पिच पे जहाँ पे ऑलरेडी 2 मैच हो चुके हैं, इट्स बेटर टू बैट फर्स्ट बिकॉज इट्स रियली टफ टू चेज एनी टोटल ऑन द बोर्ड. तो लेकिन जो बांग्लादेश के कप्तान है उनका ये कहना है कि दे वर हैप्पी टू बोल फर्स्ट. It means they are very confident to chase down any total on this track. So let's see how the proceeding will go. But so far, let's see how many runs South Africa will post first. And a lot of their batters, including the captain, as he said on the toss as well, they need to find their form back. They need to get those. और इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि you train yourself accordingly.
लाइक क्योंकि साउथ अफ्रीका का ये अभी तक के टूर्नामेंट के अंदर दे ऑलवेज वांटेड टू बॉल फर्स्ट and that will test themselves कि where they are standing as a batting unit and how many runs under difficult condition they can post. Yep, good test for them today. Their batters get first crack at the wicket. Playing 11s are ready though, so Mr. Martin Guptill, if you please. South Africa winning the toss, electing to bat first, an unchanged playing 11 for them. Yeah, it is, and we've spoken about the importance of their seam bowling attack with Bartman, Nokia, Rabada and Marco Jansen. Maharashtra rounded out with his left arm spin as well, but the real pressure today goes on the top order. Quinton de Kock, Hendricks and Markram were all wanting to be scoring a lot of runs today to put themselves in a position to win the game with scoreboard pressure. Klaasen, you know, he's probably due for runs as well. Miller, off the back of his fantastic innings the other day, will wanting to keep that going. And a birthday boy, I hear. Birthday boy today, Yeah. you know, get another year older, another year wiser. And then obviously Tristan Stubbs to round out the 11 with his youth and exuberance that he brings to the side with his exciting stroke play. You know, they'll be wanting to put on a really good show in this first innings today. Who's your MVP out of this playing 11 today? Or I think Heinrich Klaasen's going to score a few today. I think he's going to be the one to get them across that decent total they need. Okay. Thanks, Marty. Can we have the Bangladesh playing 11? Mohammad Do I have Hafiz to? will walk us through the players and, of course, in the end, who you think will be the key player for Bangladesh. Can I'm we still please waiting for have the Bangladesh playing 11? There's just one change, जितना अभी तक हमें पता चला है टॉस पे just one change for Bangladesh. जाकिर अली is in for सौम्या सरकार, but बाकी के जो players हैं वही खेल रहे हैं और बैटिंग के अंदर उनका एक change आया है. If we can have the professor and his analysis on the playing 11 South Africa. in just a bit. Bangladesh की playing 11 जी, can we have it? Okay जी, walk us through the. देखिए मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना वो ये 4 लोग हैं कि इस मैच को जीतने के लिए ये क्या बॉलिंग करते हैं, बिकॉज इन्होंने चेस करना है तो इनका रोल अहम है. जैसे कल हमने देखा कि पाकिस्तान की बॉलिंग ने अंडर पार आउट करके दिया, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि ये अंडर पार रन्स पे ये मुस्तफ़ीज़, तंजीम, तस्कीन, रिशद पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच हैं. हाउ वेल दे विल बोल अलॉन्ग विद शाकिब, बिकॉज इनकी कंट्रीब्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो अगर ये 5 मिल के अंडर पार रन्स जो हैं वो रोकते हैं, विल बी ग्रेट. would be great to see if Litton will score runs because he is their main player. और ऊपर से जब ये स्कोर करते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है और ये ऐसे प्लेयर हैं जो मैच जीत सकते हैं. इनके साथ ऑब्वियसली कप्तान वुड लाइक टू हैव गुड रन्स ऑन द बोर्ड कि अगर ये अच्छा परफॉर्म करें. हृदय हमने इनकी बात की है, शाकिब की बात की है. लास्ट मैच के अंदर महमूदुल्लाह ने बहुत आला परफॉर्मेंस दी. आई वुड लाइक टू सी लाइक कंटिन्यूइंग ऑफ हिज फॉर्म विद शाकिब एंड लिटन. अगर ये 3 लोग इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेलते हैं तो they have a very good chance to chase any total. And they have a balance in terms of experience as well as players who are new and who are coming in. And I haven't seen too much about Jakir, so I cannot say much about him, but he's a wicketkeeper batsman who plays some improvised shot. लेकिन देखना ये है कि ये लोग क्या मोमेंटम ला के यहाँ पे छोड़ते हैं, क्योंकि अगर बात सिर्फ जाकिर पे आएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. इन 5 लोगों ने जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर महमूदुल्लाह. If they will do well, they will have a good chance to win the game. की प्लेयर मेरा की प्लेयर, मैं हमेशा कप्तान को अपना की प्लेयर मानता हूँ कि जब वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आता है तो बहुत शानदार जो है परफॉर्मेंस होती है. आई वुड लाइक टू सी नजमुल टू स्कोर रन्स एंड लिटन दास. Blue है कैप्टन पे भी, but that's the playing 11 for Bangladesh. Just one change for them, and of course South Africa going forward with the same team. They are. They've elected to bat first as well. So I'm going to come back to you, Yunus. How do those Bangladeshi bowlers try and pierce, particularly that top order of South Africa, knowing what we know roughly now of the conditions in New York City? What sorts of lines and lengths would you be asking from your bowlers up front if you were captain today? If I'm a captain, my message will be very simple. We know that back-to-back game on this pitch, so the variation is more important, but hit the right areas, because we know that yesterday game when especially Naseem Shah hit the right area and then Bumrah. So use your variation, but you have to pitch the ball on the right area. So then that's how you get the more of from your bowling. I hope they're watching to game on. Hey, you heard it there from the captain himself. But let's go and find out what the conditions look like. Let's go to Waqar Yunus and Nasser Hussain in New York, who are bringing us the pitch report. Well, that was Waqar Yunus and Nasser Hussain with the pitch report. But Erin, just
what we were talking about before the toss, after the toss, the surface, you know, Waqar Yunus thinks win the toss, bowl first. इसका जवाब जो है ना हफीज भी बहुत अच्छा देंगे. And he's saying कितना difference नहीं होगा, even though you know. देखिए it's देखिए a- माइंडसेट है वकार भाई ने अपने एज ए बॉलर सोचा है, क्योंकि वो चाहते थे कि शायद अगर वो बॉलर होते तो इस पिच पे पहले बॉलिंग करते. लेकिन मैं हमेशा ये मानता हूँ कि डिफरेंट माइंडसेट होते हैं कप्तानों के. जैसे यूनुस भाई हैं, उनके सोच में इस पिच के ऊपर पहले बैटिंग करना ज़्यादा बेहतर है. अगर वकार भाई की अगर माइंडसेट की तरफ जाएं तो वो चाहते हैं कि पहले बॉलिंग की जाए बीइंग अ बॉलर. तो मुझे ये लगता है कि विन विन सिचुएशन हमें देखने को भी मिली टॉस के ऊपर भी, कि माकरम जो है वो बैटिंग करना चाह रहे हैं और जो Everybody is happy Everybody after is the happy. toss. I'm happy, Guptal is happy, Aaron happy, you know, everybody Both is happy. captains happy, Yeah. both teams happy. I think Wakar's just looking at, you know, the cracks opening up. It's early That's in the why he's a morning. bowler. There's a bit of green. Yeah, He's he's a going, bowler. He wants to "Ooh." just bang the ball on the right areas and get I love it. Always thinking like a bowler, of course. We love him. Waqar Yunus all the way over there in New York City. But it's time now to announce our winner of our Parkview Winner Mobile Daily from yesterday. So it's my absolute pleasure to announce that the winner is... Drumroll, Roha, please. Zell Burry. Oh, look at that photo. Congratulations. You have won the mobile phone. Thank you so much for entering. And the question was, who is the coach of the Pakistan cricket team for the white ball format as of 2024? That is our question for today. I should say, all you have to do to win that mobile is answer on the official Facebook page of Parkview City Islamabad and Parkview City Lahore. That's not all though, of course. J. Junaid Jamshed Winner Perfume Contest is up and running as it is each and every day of Game On Hey. So make sure you answer the question correctly. The question today being, which English cricketer was labelled as the best finger spinner in the international game by coach Duncan Fletcher in 2006? A little bit more niche there. If you know the answer to that, please call us on that number written on your screen. It's a stunning prize. We love giving that out at the each and every end of the game here at Game On Hey by Vantage Developers Roha. Wonderful game to look forward to today. Yes, absolutely. And of course, since both captains at the toss have gotten what they wanted, now the main question before we go towards the live action is, Marty, have you put your genie hat on? Because we're coming to you first with what you think South Africa will be most likely posting on the board. I have had to think about it. I think they're going to get 143 Ooh, and they're going to win by 12 runs. 143G. Interesting. For me, 150. 150 close. Professor? 130 130. And who's winning today, gentlemen? South Africa. South Africa? Bangladesh. Bangladesh? Right. South I Africa. think maybe around the 165, 170 mark. Let's see if we get a high scorer. It's about time we get a high scoring game. But gentlemen, thank you so much for joining us once again. This was our pre-show. We are ready almost for the live action, and we will of course be back after the game. Tab tak ke liye apna khayal rakhiye. And thank you so much for watching Vantage Developers presents Game On Hey.